for inviting me to this occasion, and I was here the last time as well. And I'm thankful to the SMDC conference secretariat. It was enlightening listening to Professor Waris Farooqa. I have Dr. Afzal is here as well. Today what I'm going to talk about is actually आप लोगों ने वो movies में एक आप scene देखते हैं जिसमें हम आपको एक बड़ा action scene दिखाया जाता है and then you go 10 years back. तो जो बात इस वक्त डॉक्टर फारूका ने की is the zenith of AI, is like talking about using artificial intelligence in robotics. But what I am going to talk about is actually utilizing deep learning in artificial intelligence for making surgical decisions and the processes, the trustworthiness and ethical considerations. So if I may ask you a question, how many of you actually use artificial intelligence in your daily lives? Please raise your hands. All right, so I can see a few hands raised. Think about a time, say for example, if I fast forward this time, next 10 years, can you imagine the next person sitting you is actually a robot? Difficult to imagine, isn't it? But this is what AI is heading towards. And you may be watching movies in which now robots are asking the humans, are robots bad? How many of you think having robots at your side is a good sign or a bad thing too? How many of you think it is good to have robots at your side? Okay, so there are few people who still have acceptance of robots. So मैं आज आपसे ये बात करूंगा कि this is what is going to happen, this is what is going to be the future in which the clinical decisions or the surgical decisions per se, because this is a surgical symposium, कि जब decisions लेने वाले आपकी help करने वाले robots होंगे, तो are you going to trust them or not? That is a big question. And और इसकी background में क्या processes चल रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि ये applications जो हैं, even if it's robotic surgery, how are these robots taking those decisions? So my talk is about integration of deep learning, surgical decision making, and evaluating trustworthiness and ethical considerations in AI for surgery. So हमने बात की artificial intelligence and deep learning की. So I'll first explain to you what is artificial intelligence and what is deep learning. So artificial intelligence, the two words, artificial and intelligence. Intelligence is humans' ability to solve a problem using a thinking process. Artificial obviously is not, it means that humans are not doing it, but someone else is doing it. In this case, that someone else is either a computer or a computer program. So artificial intelligence is computers or computer programs thinking rationally and acting rationally like humans. So this is what artificial intelligence is. ये टाइप्स का आपको आइडिया होना चाहिए कि हम कहाँ पे हैं और टाइप्स क्या हैं. So artificial intelligence की दो टाइप्स होती हैं, type 1, type 2. Type 1 is mainly what we are which we are concerned about, और टाइप 1 है जो हम यूज कर रहे हैं, उसमें एक नैरो एआई है, जनरल एआई है और स्ट्रॉन्ग एआई है. नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि we are using day in and day out, which is focused on a single point. Like for example ChatGPT जो आप बहुत से लोग यूज करते हैं, जो क्या है, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो आप you ask the question, it gives you the answer. That is narrow AI. जनरल AI क्या है कि ChatGPT, एक तरफ ChatGPT हो, एक तरफ Gemini हो, एक तरफ जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं, ECG कहीं यूज हो रही है, वो सब एक साथ मिलके काम करें और just imagine the output. We have not reached to that stage, but that is general AI. And strong AI वो है जहाँ पे artificial intelligence take precedence और सारे के सारे फैसले वो खुद ही करना शुरू कर दे, आप सबसे सवाल करें. तो हम अभी इस वक्त narrow AI पे खड़े हैं. This is where we are at the moment. Because I'm talking about deep learning. AI की journey started in 1954 with the Turing test. So ये अभी एकदम से कुछ नहीं हुआ. जो you must be knowing about Altman, जिसकी open AI है, जो ChatGPT, we introduced ChatGPT to you.
So the journey is almost 70-80 years long. So ये deep learning का concept क्या है? People who invented AI, they said कि there should be machines which can think like humans. तो humans का सारा network है neurons का. So that is the concept of AI as well. There is an outer layer and then there are deeper layers and then there is an outcome. So जो deeper layers हैं उनमें क्या हो रहा होता है? That is your concern. That is that doctors you should know कि वो deeper layers किस तरह से decision लेती हैं, किस तरह से एक AI robot decide करता है कि मैंने इन प्लेन्स में जाना है, या किस तरह से एक सॉफ्टवेयर से अगर आप क्वेश्चन करते हैं कि आई हैव अ पेशेंट हु इज 36-year-old female has got right leg fossa pain and standard rebound missed her last cycles, what is the diagnosis or what is the optimal treatment? So how would that software tell you to decide that this is an ectopic pregnancy or a perforated appendix, or what surgery is optimal for this patient? उसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है. And you can see that in from 2014 to now the publications have increased from this level to approximately it has increased by 5 times. This is I think one of the most important slides of my presentation. अगर आपको ये concept समझ में आ जाते हैं तो you can understand कि AI can be friendly, AI can be disastrous. Majority of us sitting here are either supervisors or trainees. So there is a supervised learning and there is an unsupervised learning. Supervised learning क्या है? Supervisor tells the students how to do things and that is supervised learning. AI में supervised learning क्या है? जो कंप्यूटर की कोडिंग करता है, जो एल्गोरिथम्स बनाता है, वो सॉफ्टवेयर को या मशीन को बताता है कि ये काउ है, ये गोट है, ये स्कैल्पल है, ये अपना यूज ऑफ लेजर है, व्हाटएवर. दिस इज कॉल्ड एज सुपरवाइज्ड लर्निंग. अनसुपरवाइज्ड लर्निंग ये होती है कि जब हम ट्रेंड हो जाते हैं एज रेजिडेंट, वी स्टार्ट मेकिंग डिसीजन ऑन आवर ओन, एंड दिस इज द मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ एआई, where the AI start making decision on its own. So, can AI robot go berserk? That's a big question. Can AI softwares give you wrong decisions? That is a question. So you need to decide when to trust these AI softwares or not, and when not to, and what is going on here. Then इसमें जो important कुछ terms लिखी हुई हैं, एक मैंने आपसे कहा supervised learning, unsupervised learning, then human feedback based learning. आपने गौर किया होगा जो हम अभी यूज करते हैं चैट बॉट्स, उनके एंड पे एक थम्स अप का मार्क बना होता है. उसका मकसद ये होता है कि जब आप एक क्वेरी देते हैं चैट बॉट को, बी इट चैट जीपीटी, बार्ड, जेमिनाई, को पायलट, वो आपसे पूछता है कि मेरा ये आंसर जो है ये कैसा लगा आपको. जब आप वो थम्स अप के ऊपर करते हैं कि यस इट्स अ गुड आंसर, तो वो रिकॉर्ड करता है ये बात कि हाँ ह्यूमंस मुझे ये बता रहे हैं कि ये आंसर ठीक है. और अगर आप कहते हैं कि आंसर ठीक नहीं है तो रिकॉर्ड करता है कि आंसर ठीक नहीं है, इट नीड्स अ सुपरविजन, इट नीड्स अ फर्दर मॉडिफिकेशन. तो उसको हम कहते हैं ह्यूमन फीडबैक बेस्ड लर्निंग. सो द कॉन्सेप्ट हियर इज दैट यू आर कॉन्स्टेंटली ट्रेनिंग योर चैटबॉट्स और योर एआई सॉफ्टवेयर. फॉर एग्जाम्पल, जो मेरा चैट जीपीटी है वुड बी डिफरेंट फ्रॉम डॉक्टर फारूका's चैट जीपीटी और तैलट चैट जीपीटी. मैंने अपने चैट जीपीटी को बताया हुआ है कि आई एम प्रोफेसर डॉक्टर रेहान अहमद, मेरे ये क्रेडेंशियल्स हैं, मेरा ये इंटरेस्ट है, तो वो जो मुझे आंसर देता है वो मेरे क्रेडेंशियल्स के मुताबिक देता है. लेट मी नो जब 5 मिनट्स रहे तो आई कैन स्पीड इट अप. ओके, सो देखिए ये चीज होती है. सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है? स्टेप 1, ह्यूमन लेबलिंग ऑफ ट्रेनिंग डेटा. आप बता रहे हैं, जो कि डॉक्टर फारूका ही बात कर रहे थे, कि ये गॉल ब्लैडर है, फिर एल्गोरिदम जो है वो क्या इसमें यूज होगा कि डिफरेंट इमेजेस हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन है. जब आप ये लेबलिंग कर देते हैं और बहुत ज़्यादा डेटा दे देते हैं एआई को, तो अब वो डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेता है. और जब वो डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेता है तो फिर क्या होता है, अब वो अनसुपरवाइज्ड काम करना शुरू कर देता है. तो अगर आपका डेटा ठीक नहीं है या आपका डेटा खराब है तो डिसीजंस भी खराब आएंगे. ठीक है, तो ये आपने याद रखना है. सो ये थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल कि सर्जिकल इमेजेस अंडरगो फीचर डिटेक्शन, रेलेवेंट फीचर्स कैन बी ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड एंड फर्दर प्रोसेसिंग, और फिर वो डिसाइड करता है. तो जाहिर बात है कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग अपनी आंखों से चीज़ों को देखते हैं, हाथों से काम करते हैं.
तो जो कंप्यूटर मशीन्स हैं उनकी आंखें क्या हैं? कैमरा। उनके हाथ क्या हैं? वो जो आर्म्स लगी हुई हैं। सो दिस इज हाउ दे आर इंटरप्रेटिंग, एंड उनका उनका ब्रेन क्या है? द डीप न्यूरल नेटवर्क, जहां डिफरेंट एल्गोरिदम्स चल रहे हैं. सो दिस इज अगेन इज ऑल दैट प्रोसेस के नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहाँ पे हो रही है, ये आपको मैंने दिखाया था पहले. दिस इज डीप न्यूरल नेटवर्क. ये इमेजिंग है, ठीक है, जो आप बहुत से रेडियोलॉजिस्ट यूज करते हैं, और ये इसका आउटपुट है. एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स. सो ये जो AI इन क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग है, ये सिर्फ सर्जरी में नहीं है, ये रेडियोलॉजी में है, ये डर्मेटोलॉजी में है, ये साइकेट्री में है. दिस इज इन लोड्स ऑफ प्लेसेस. और अगर आप इसमें देखेंगे तो अगर हम ये बात करें, इफ वी टॉक अबाउट दैट हाउ AI complements the human decisions, so you'll come to know that humans are good at detection, perception, judgment, induction, improvisation, and long-term memory, whereas the AI systems or computers are good at power, speed, computation, replication, simultaneous operation, and short-term memory. So combine them both and you'll get excellent results. That's the idea. और इन सब चीज़ों में ऑलरेडी काम हो रहा है, जो कि मैं अब अभी की बात कर रहा हूँ. सो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स AI की मदद से हो रहे हैं, डेटा क्यूरेशन हो रही है, रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है, मल्टी ऑब्जेक्ट ऑप्टिमाइजेशन हो रही है. अब AI के करंट यूजेस में दो चीज़ें आई वुड लाइक टू शेयर विद यू. नंबर वन इज Alina, an AI capable of detecting breast cancer using images from lymph node biopsies, report successful outcomes comparable to human decision making. So this is already taken up. लोग बात करने शुरू हो गए. The other day I was asking one of my trainees, one of my house officers, आपने आगे कैरियर में क्या करना है? तो they said, मैं सोच रही हूँ कि रेडियोलॉजी करूँ या सर्जरी. आई एम एप्रीहेंसिव अबाउट रेडियोलॉजी. मुझे डर है कि रेडियोलॉजी तो कम्प्लीटली जो है ना वो कहीं AI टेकअप ना कर ले, just because वो सारी बातें कर रहे हैं. So there are concerns now. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि AI can be sexist and racist. It's time to be fair. देखिए, अगर डेटा सारा वेस्ट से आ रहा है, डिसीजन यानी सारा उसके अंदर आपने डेटा डाला हुआ है, चाहे वो कोई भी हो, कंप्यूटर मशीन हो, वो हो, तो डिसीजन उसी की बेस पे लेगी. सो a study that implemented machine learning to detect skin cancer used less than 5% data from a dark skin patient population to train the model, potentially leading to bias against dark skin patients. So this is very important. You need to understand that as well, कि आपकी जो मशीन यूज कर रहे हैं आप या प्रोग्राम यूज कर रहे हैं आप, उसका डेटा कहाँ से आया, उसके अंदर एल्गोरिथम्स किसने डाले हुए हैं. ये कुछ कैटेगरीज हैं. आप हैरान होंगे कि FDA जो है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने अब इन सॉफ्टवेयर को कैटेगराइज किया है, और वो ये कहते हैं कि ये कैटेगरी ऑफ द सॉफ्टवेयर है यूज्ड इन दी ये SAMD जो है, इसको वो अब एक्सेप्टेबल कहते हैं कि इसकी बेस पे आप डिसीजंस ले सकते हैं. So now I'll give you a small example as well. This was a paper I published like a year ago, ChatGPT reshaping medical education and clinical management. And such is the acceptance of AI that within a small time it has got, you can see 328 citations. So people are now accepting it, people are now using it. Now who can use it? Who can use the chatbots to make decisions? The patients as well and the surgeons as well. So I have some two examples, quick examples. So आप ये देख रहे हैं, ये मैंने ChatGPT को एक क्वेश्चन दिया एज अ सर्जन. मैंने कहा कि I have a 59-year-old patient who had a wide local excision done for intraductal carcinoma in situ. She still has the superior muscles involved. What should be steps in the management? And can you imagine कि उसने मुझे पूरे का पूरा जो है वो मैकेनिज्म बताना शुरू कर दिया. अब लेट्स हैव अ लुक एट इट. ये वीडियो प्ले होगी यहाँ से. ओके, सो आप ये देखिए, इट इज टेलिंग मी एंड देन आई एम आस्किंग इट. मैंने कहा शी इज ये स्टेज है उसकी, हिस्टोपैथोलॉजी पे ट्यूमर ये था, अब मुझे बताओ कि क्या ऑप्शंस हैं. फिर मैंने उसे कहा एनी गाइडलाइंस फॉर इंट्राडक्टल DCIS. इट स्टार्ट्स टेलिंग मी. सो दिस इज डिफरेंट जो आप पहले करते थे. पहले तो आप करते थे ना, you'll go into Google, you'll put in a search and then you'll get so many papers, but you need to choose कि कहाँ से आपने क्या चीज select करनी है. The scenario is completely different now. You can interact with these chatbots. These are highly intelligent chatbots. Just imagine कि
कुछ ही अरसे में जब कॉकरेन डेटाबेस अपना चैटबॉट रिलीज करेगा तो सारे के सारे आपके डिसीजंस जो हैं वो बेस्ड होंगे ऑन सिस्टमैटिक रिव्यूज एंड मेटा एनालिसिस. सो आपका एक इंडिविजुअल डिसीजन would be lot less research based or evidence based than a decision which you are getting from a chatbot. Then ये एक और एग्जाम्पल है जिसकी एग्जाम्पल ये कि पेशेंट्स क्या करेंगे. आप अक्सर बात करते हैं यार ये वो गूगल डॉक्टर वाला एग्जाम्पल लेते हैं, यार ये गूगल पढ़ के आ गया है और गूगल से हमसे क्वेश्चंस कर रहा है, और वो तो इंफॉर्मेशन वो होती है जो उन्होंने रैंडमली देखी होती है. बट अब जो चैलेंज होगा डॉक्टर्स के लिए वो ये होगा कि जब पेशेंट इस चैटबॉट से गुफ्तगू करके आपके पास आएगा. So for example, I have been told by the doctor that I need surgery for removal of gallstones, but I am not convinced. I think I have no main symptoms that require surgery and it can be maintained on medicines alone. Please help me. So this is what happens if you ask the chatbot a question and you can converse with it, and you can converse with it and it will give you the pertinent answers and you can talk with it. What do you think? Can I get away with surgery? I'm a pre-diabetic and want to go for the surgery. Can you give me an adaptive plan for myself? तो चैट जो ये बॉट्स हैं आपके एडेप्टिव जो है प्लान्स आपको देंगे, डिजाइन्ड फॉर यू ओनली. So this is what we are heading to. And then other softwares like Visual DX, ये भी आपको diagnosis में help करते हैं. So now the concern, last few slides, is about trust versus distrust. इन पे ट्रस्ट करना है या नहीं करना. यानी आप इन द मिडल ऑफ नाइट एक रेजिडेंट हैं, आपको नहीं समझ में आ रही है, आपने चैट जीपीटी खोल लिया या कोई और खोल लिया, आप उससे आंसर ले रहे हैं, तो उस आंसर पे ट्रस्ट करना है कि नहीं करना. तो उसके लिए इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑब्वियसली इट डिपेंड्स कि आपका जो चैट बॉट है उसका बैकग्राउंड एल्गोरिदम जो है वो कैसा है. क्या वो बायस्ड है, एज लाइक डिस्ट्रक्टिव है, या अच्छा है, लाइक टर्मिनेटेड वर्सेस वर्जन. बिल्डिंग ट्रस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. सो यू नीड टू ट्रस्ट. अब वो ट्रस्ट कैसे आप एस्टैब्लिश करेंगे? सो ट्रस्ट की जब हम बात करते हैं तो हम अगले बंदे पे क्यों ट्रस्ट करते हैं? आप क्यों अपने फ्रेंड्स पे ट्रस्ट करते हैं? हम ट्रस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि वो ऑनेस्ट हैं, वो ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, we know they're better than us, and they are reliable. So ये सारी characteristics should be in a chat bot as well, or an AI based software as well. So I'm just showing you this thing which is very important. Okay, this is what are the factors which are going to affect the decisions. Complex algorithms, data, biases, subject knowledge and artificial intelligence. अगर आपका जो डीप लर्निंग एरिया है वो ट्रांसपेरेंट है, रोबस्ट है, फेयर है, तो आपके आउटकम्स बेहतर होंगे. सो द ट्रस्ट इज फ्रॉम मैक्सिमल ट्रस्ट टू नो ट्रस्ट एट ऑल and an optimal trust. The message at this moment in time is that you need to have a trust with a pinch of salt. So optimal trust रखें, जो भी information मिले आपको उसको उसकी fact checking जरूर करें. So that is what it is. And now this is what is also happening. People start thinking about, okay, should we become a robot or not? And thank you very much. If you have any queries, please do ask me at the end.